to RCC show presented by Yuvaap. Today we have Dr. Nidhika Bahl, who is a life coach, relationship coach, health coach, and also an author of a book named The Queen of the Comeback. Ma'am, before starting, अपने थोड़ा सा लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए, how you entered this field of health and fitness. Oh, wonderful. Okay, thank you for asking that question, Vishal. It's a long story. Traditionally, I was educated in the field of finance, and I had a corporate career for almost 7 years. And after that, I had a startup. I had two startups, one in the advertising space and one in the AI space. And somewhere along, life became difficult, and I underwent clinical depression for 6 years. And one of the motivations to get out of depression was to be able to help people with my experience. As I always like to say, you hurt, you heal, and you help. And that's where the journey started to becoming a mental health coach or a life coach, eventually a relationship coach and business coach. And then, obviously, I added more things to my kitty in terms of healing processes. Then I did a PhD and became a doctor, so PhD in holistic health and healing. And I think the last thing I added to my kitty was body. I was always working in the area of mind and soul, but it's never complete without taking care of your health. And that was one area where I was personally weak. But during the lockdown, I took it upon myself that this is something that I have to master. So I have to get fit and I have to help people with their fitness. And that's how it started. And I enrolled on an online course, a 3-year program with the Institute of Integrative Nutrition in New York. And I studied, and whatever I learned, I applied on myself and a few friends who were willing to, be with me on this journey. And we all got great results, and that's how I got started formally as a health coach as well. Yeah, so that's been the story. So many of the great stories started during 2020 only. When lockdown started, Yes. many of us realized our potential that हमें ये field में नहीं जाके इसमें कुछ करना चाहिए. So many great, I have seen like many great stories started at 2020. So yes. So ma'am, like today's topic, 8 pillars of healthy lifestyle. So उसके बारे में आपसे मैं पूछना चाहूँगा that what according to your observation are some of the most common risk factors that have led to this pandemic of lifestyle disease that we as a generation are facing in nowadays. राइट तो विशाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड आई थिंक वी ऑल हैव टू अग्री कि जो फूड की क्वालिटी है हम पहले तो खाने से ही शुरू हो जाते हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितने पहले हुआ करती थी जितने हमारे पेरेंट्स ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने क्वालिटी खाई वैसा नहीं है बिकॉज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग लैंड उतना ही है मोर फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस सो ऑब्वियसली दे आर यूजिंग लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं केमिकल प्रोडक्ट्स आर गोइंग इन टू द सॉइल सो ऑब्वियसली अगर सॉइल के अंदर मिनरल कंटेंट इज नॉट बीइंग मेंटेन आपको मतलब सोचिए कौन से फार्मर के पास टाइम है कि वो देखे कि भाई सॉइल के अंदर मिनरल कंटेंट है कि नहीं सो अगर Correct. सॉइल के अंदर ही मिनरल कंटेंट नहीं है तो हमारे फल और सब्जियों में कहाँ से आएगा फिर फल और सब्जी आते हैं पहले मंडी बड़ी मंडी में आते हैं वहाँ से हम छोटी मंडी में आता है वहाँ से हम खरीद के लाते हैं फिर हमारे फ्रिज में वो एक हफ्ते तक सड़ते हैं फिर हम उनको तड़के मार मार के पकाते हैं तो उसमें जो थोड़ा बहुत Correct. न्यूट्रिशन होता है वो भी खत्म हो जाता है so there is no nutrition in our food as such okay plus junk food availability is very very high पहले ऐसा होता था कि व्हेन आई वाज स्मॉल तो ऐसा लगता था कि एक समोसा लेने भी जाना होता था तो यू हैव टू वॉक एंड गो एंड इट वाज वंस Hmm. इन अ वाइल्ड थिंग बट अभी तो लोग चाय बन मस्का सब कुछ स्विगी पे बुला लेते हैं मतलब आप बिल्डिंग से निकलो तो स्विगी आ रहा है स्विगी जा रहा है या जोमेटो आ रहा है और Correct. जोमेटो जा रहा है इतना खाना बाहर से ऑर्डर होता है ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ऑफ हाई क्वालिटी ऑल्सो पोल्यूशन इज़ अ फैक्टर बिकॉज जितने एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में हमें इफेक्ट करते हैं लेकिन अगर हमारे न्यूट्रिशन में उतना capacity नहीं है to cope with that kind of environmental factors then that is a problem ऑल्सो लैक ऑफ स्लीप लोग उतना सोते नहीं हैं जितना उन्हें सोना चाहिए है 7 to 9 hours ऑफ स्लीप नहीं है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है वी आर इन अ वेरी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर ऑब्वियसली लीड टू a pandemic of lifestyle diseases as you rightly said. So ma'am, what can we do to protect ourselves? Again, a very great question, Vishal, because I think सबसे पहले तो whatever is available in terms of food, we have to eat healthy balanced diet जितना भी हम खा सके. Also, we should look at least incorporating 10,000 steps daily. I always say अगर आपके पास जिम जाने का टाइम है आप ज़रूर करिए आपके पास योगा का टाइम है आप ज़रूर करिए अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप हर घंटे उठ के 10 मिनट वॉक कर लीजिए wherever you are whether you're at work whether you're at home just movement is what is required
at least we can start that movement. आप फोन पे बात करते हैं, हम लोग सब एटलीस्ट दिन में 1-2 घंटा फोन पे बात करते हैं, तो कम से कम उस समय चल लीजिए. एंड इट इज नॉट अबाउट स्पीड वॉकिंग, इट्स जस्ट अबाउट क्या मैं उतने स्टेप्स कर रहा हूँ दिन में कि नहीं. इफ यू आर नॉट कॉन्शियस, मोस्ट पीपल आर डूइंग अंडर 2000 steps. So just by incorporating 10,000 steps, it can be life changing for your physical fitness. Second thing you can do is definitely incorporate good 7 hours of sound sleep, because if you don't sleep enough, straight away the weight comes right on your belly. It also leads to a lot of stress, digestion issues, increased hunger, increased cravings. वो एक चीज है. Third is associating yourself with positive minded people, because I think people who are focused on कि यहाँ की कचौड़ी अच्छी है और यहाँ का गुलाब जामुन अच्छा है और यहाँ के गोलगप्पे अच्छे हैं, those are not great buddies to have when you're on a health journey. You need people who are focused on health, who are talking about protein shakes, who are talking about मैं supplement क्या खा रहा हूँ, कौन सी कंपनी का खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ, how I'm cooking, I'm adding vegetables to my diet, how I'm ensuring I'm getting the right requisite protein amount. So those things are there. And of course, over and above, adding supplements to your diet also, because no matter how well you eat, because of the factors I explained in the first question, there will always be a nutrition gap. और उसको हमें plug करना बहुत ज़रूरी है on a daily basis, because if the gap increases, it will lead to injury. So if you're looking at prevention in the real sense, you will, today's day and age, it's non-negotiable. You have to have good whole food organic supplements added to your diet. Okay. So, ma'am, as you mentioned that supplements लेने are kind of mandatory. So, ऐसे layman अगर मेरे को nutrition gap को fill करना है, then how should I start? वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. आई थिंक सबसे पहले तो हम प्रोटीन की बात करते हैं, बिकॉज सभी जानते हैं, इतनी बार आर्टिकल्स छपे हैं न्यूज़पेपर में कि 9 out of 10 इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट. सो ऑब्वियसली we need protein. Most of us are vegetarians, or we don't, हमारे घर में अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी है इंडिया में, तो हफ्ते में 2 बार नॉन वेज खाते होंगे, राइट. वी नीड 1 gram per kilogram बॉडी वेट ऑफ प्रोटीन. इसका मतलब ये कि अगर कोई 60 ग्राम्स का 60 kgs का पर्सन है, 60 ग्राम्स प्रोटीन रोज के रोज चाहिए. और एक वेजिटेरियन डाइट में अगर आप दाल भी खा रहे हैं, थोड़ा पनीर भी ले रहे हैं, अपना सोया भी आपने थोड़ा सा डाल लिया, तो भी 25 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन आपको दिन में नहीं मिल रहा है. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो तकरीबन 35 ग्राम. इसका मतलब हर एक को शॉर्टफॉल है. सो प्रोटीन एंड मैं ये सजेस्ट करूंगी, ऑल प्लांट प्रोटीन इज व्हाट यू हैव टू गो फॉर. लुक फॉर अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, बिकॉज इट्स बेटर फॉर योर हेल्थ, नॉट एन एनिमल बेस्ड प्रोटीन. एंड गो फॉर दैट. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 वुड बी मल्टीविटामिन. आई थिंक हर कोई एक मल्टीविटामिन मल्टी से बेनिफिट कर सकता है, बिकॉज हमें 9 से 10 सर्विंग खाना चाहिए, ऐसे WHO बोलता है, बट नन ऑफ अस आर ईटिंग. हम लोग एक एप्पल काटते हैं, आधा आधा करके 2 लोग खाते, सोचते बड़ा हेल्दी खाया आज. हाँ, लेकिन समोसे आते तो सबको 2-2 अपने चाहिए होते हैं, है ना. और अगर हम Correct. आम आता है तो सबको 2-2 चाहिए होते हैं, लेकिन केला है तो आधा आधा करेंगे, Correct. है ना. तो जो भी हमें, ऑल्सो हमारे फेवरेट कलर्स भी रहते हैं, जैसे हर कलर के फल और सब्जी हम लोग नहीं खाते, तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है बॉडी में, मिनरल्स की कमी रह जाती है, विटामिन की कमी रह जाती है, इसलिए एक मल्टीविटामिन ज़रूरी है. और तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगी कि एक ओमेगा 3 हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेलुलर इन्फ्लेमेशन को टेक केयर करता है. अगेन, हमारे डाइट में ओमेगा 6 बहुत है, ओमेगा 9 बहुत है. वी हैव सेलुलर इन्फ्लेमेशन विच लीड्स टू मेनी डिजीजेस. उसको कंट्रोल करने के लिए ओमेगा 3 सप्लीमेंट इज़ वेरी गुड. इट्स अ फिश ऑयल सप्लीमेंट. इफ यू वांट वेजिटेरियन, you can always try with chia seeds and Flaxseed and chia seeds. yes, you can try with that as well. But अगर आप open है तो nothing better than taking a fish oil supplement, even if you're a vegetarian. And बहुत से vegetarians बोलते हैं हम नहीं खाते, but I will tell you, अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी कोई कैप्सूल खाया है तो आपने नॉनवेज खा लिया है, तो वो तो आप भ्रम Okay. निकाल दीजिए कि ये नॉनवेज है. Just eat it from a health point of view, medicine समझ के, at least 2 capsules of omega 3 every day. So that is something that can benefit you a lot. Apart from that, अगर आप highly polluted city में रहते हैं, तो you can look at taking a vitamin C or a tulsi to combat the pollution, giving more support to your lungs and building your immunity. So these are just basic supplements that everybody could benefit with. Okay. Ma'am, which multivitamins, you said that we have to take some multivitamins. So which are these multivitamins which we have to take as a supplement? So I personally have been using and recommending Nutrilite as a brand for last 12 years, and I've seen great results, because the product, they have 6,400 acres of organic farms from where they actually grow the fruits and vegetables from where the supplements are made. And supplements दो तरह के होते हैं, या तो आप chemical factories में बना सकते हैं या आप farms में बना सकते हैं. Obviously
जो ऑर्गेनिक फार्म से निकल के आए हैं। जब हम लोग ऑर्गेनिक की बात करते हैं ना, कई लोग सोचते हैं ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डाला होगा। नहीं, व्हाट दे मीन बाय ऑर्गेनिक इज दे आर इंश्योरिंग that they are putting ingredients into the soil which is ensuring mineral content in the soil. They're using spring water for irrigation. They are using falcon birds to keep the pests away. They are using Egyptian earthworms to till the soil, so no hand contamination. उनके जो फार्म्स है वो नो फ्लाइंग जोन है, तो ऊपर से भी पोल्यूशन नहीं है, एयर से भी नहीं है. So very organically created, plus they have a patented technology which converts the, when they pluck the plant, within 30 minutes they're able to convert it into tablet form. And they are able to lock in what we call phytonutrients, plant based nutrition, into their product, which no other supplement company has been able to do. They have a patented technology and they get great results. So I personally like to use Nutrilite. There are multiple brands available out there. You can do your research and figure out what's good for you, but my research tells me that Nutrilite is the best brand. Okay, right. So, ma'am, coming to next question. So, I'm sure you would agree that Indians are now getting fatter day by day. So, in today's world, there are so many yo-yo diets and so many yoga gurus. I mean, diet gurus which are available online. Yes. जिससे कि क्या होता है कि लोग विदाउट एनालाइजिंग देयर बॉडी टाइप दे जस्ट फॉलो डाइट एंड क्विकली वेट लूज कर भी लेते हैं इफ दे आर ट्राइंग टू वेट लूज, मतलब इफ दे आर Right. ट्राइंग टू लूज वेट, एंड देन सडनली वो वेट एक महीने में वापस आ जाता है. तो इसके लिए व्हाट आर योर सजेशन? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया में ऐसा ट्रेंड चेंज क्यों हो गया कि नाउ दैट दे आर राइज इन केसेस ऑफ ओबिसिटी, एंड सेकेंडली इज देयर एनी सॉल्यूशन जो कि हम जिससे कि वेट लूज कर सकें एंड देन उसको सस्टेन कर सकें? Right, right. Again, I think it's a wonderful question, and I will tell you from my personal experience, Vishal, that I have personally been somebody who's been on a diet roller coaster ever since my teenage years. कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, and a सेम lot यार. of times, I would have, yeah, in my wardrobe, I always have medium, large, XL, double XL. So my It's friends like used my to laugh. story. आजकल You're कौन, telling my yeah, story. sorry. So they would tell So me I have like आजकल कौन सा 30, 32, 34, 36, every trouser I have. everything, yeah. So they would tell me कि यार आजकल कौन सा size पहन रही है तू, like that would be the joke, with the friends. But again, what I discovered in what I learned about integrative nutrition is that I think the biggest mistake we make when it comes to weight loss is we focus on the weight when we are standing on the scale. जब हम स्केल पे खड़े होते हैं, अपना वेट देखते हैं और हम लोग फिर वहाँ से वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो कई बारी बॉडी में हम पानी, वी लूज, वी गो फॉर दीज फैट डाइट्स, क्विक 10 kgs in 1 month. सो हम लोग पानी निकल जाता है बॉडी से, मसल निकल जाता है, फिर आ जाता है, सो वी आर ऑलवेज अप एंड डाउन. बट इफ यू टारगेट फैट लॉस, okay, and I think right now there is a trend, a lot of people are talking about fat loss. अगर आप fat loss पे target करो तो you can actually correct the body composition, and in the long run maintain a better healthy weight. In fact, at any given weight, अगर आपके body में muscle ज़्यादा है तो आपका metabolic rate ज़्यादा रहेगा. Metabolic rate ज़्यादा आएगा, that means you can eat more food for the same at that weight Hmm. than you could normally eat. So the idea is not to go on restricting yourself for the rest of your life. The idea is to make a switch towards healthy lifestyle, and at the same time focus on body composition corrections. इंडिया में इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जो देखने में पतले हैं लेकिन एक्चुअली पतले नहीं है. आई कॉल देम टोफीज, थिन ऑन द आउटसाइड, फैट ऑन द इनसाइड, सो दीज आर पीपल हु जिन प्रोटीन खाते ही नहीं है ना, बॉडी में मसल ही नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है, बस लैंकी है, और आप उनका Correct. अगर मेजर करने जाएंगे ना तो उनका बॉडी में भी फैट परसेंटेज बहुत हाई होगा. लाइक आई हैव सीन पीपल इन देयर 50 kgs वेट, 50% fat percentage. Oh, It's crazy. Sometimes you'll see a fat person at 100 kgs with 30-40% fat, but you'll see a 50 kilo person with 50% fat. Very unhealthy. correct. So focus on fat loss, body composition correction. And the ideal way to get started is कि भाई सबसे पहले तो खाने की प्लेट हम लोग ठीक करें. When we say खाने की प्लेट ठीक करें, उसका मतलब है कि 50% of what is on your food plate should be vegetables. फ्रूट भी हो तो थोड़ा हो, लेकिन ज़्यादा वेजिटेबल्स होने चाहिए. चाहे आप सब्जी लो, चाहे आप रायता बना के खाओ, चाहे आप सैलेड के फॉर्म में खाओ, सूप के फॉर्म में खाओ, या स्मूदी के फॉर्म, वेजिटेबल स्मूदी पियो, जो करना है करो, लेकिन आधी प्लेट में वेजिटेबल्स चाहिए. एंड देन यू शुड हैव योर होल ग्रेन्स एंड प्रोटीन एंड गुड फैट्स एंड oils, and of course your dairy if you're not daily dairy intolerant in that sense. And you should snack on healthy snacks like bhuna chana, makhana, nuts and seeds, but हिसाब से. कई लोग सोचते हैं हेल्दी फूड है तो खाए जाओ. खाते रहो. You एंड can't मोर have ओवर रोस्टेड भी healthy food खाते हैं तो also. पूरा ऑयल के साथ.
हाँ, वो पूरा मसाले मार-मार के अपना खा रहे हैं, अरे आई एम जस्ट हैविंग हेल्दी नट्स बट उसके अंदर इतने तड़के मार दिए हमने घी के कि वो पता नहीं कितना हेल्दी बचा, नहीं बचा, वी डोंट नो। एनीवे जोक्स अपार्ट, बट द आइडिया इज 28 grams of nuts is enough in a day. That's more than enough. Don't go beyond that. And drink 8 to 10 glasses of water. अगर आप एक measurement चाहें तो I can say 30 ml per kg body weight is the water requirement. So अगर कोई 64 kgs का है for example, they will need about 1.9 liters of water. So you can do the maths. जो भी आपका weight है ओके multiplied by 30 ml, that is how much water you need every day. But water सिर्फ पीना नहीं है, खाना भी है. So it has to come from vegetables also. It has to come from your smoothies also. And I'm not saying juices because we don't want to remove the fiber. So आप vegetable smoothie पियो, juice मत पियो. Get it from that. You need to get that water from food sources also, not just by drinking water. Okay. And caffeine, tea, coffee, ये सब पानी में काउंट नहीं होते, तो नहीं प्लीज डोंट काउंट those because they are diuretic, they're not water. They're removing water from the body. Okay. You can have things like watermelon, oranges, apples, they're rich, kheera, rich in water. Yeah. राइट सो मैम अलॉन्ग विद दैट जो भी आप अपने क्लाइंट को डायरेक्ट करते हैं कि जैसे जो मिलेनियल्स हैं आजकल जिनको दे आर लाइक 12 to 14 आवर शिफ्ट होती है जो बैठे रहते हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे इंक्लूड करें एक तो आपने बताया कि जैसे 10,000 स्टेप का एक वो रखिए आप काउंट दैट Right. दैट शुड गेट कंप्लीटेड उसके अलावा जैसे ऑफिस में मे बी नॉट पॉसिबल हो कि हम हर टाइम घूम सकें उसके अंदर तो उसमें क्या कर सकते Right. हैं See, you can do many things. आप staircase ले सकते हो instead of the lift, right? आप अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क कर सकते हो ताकि जाना ही पड़े गाड़ी तक, या you can walk till the train station if you're taking a train, instead of taking an auto. So ऐसे धीरे धीरे करके you can incorporate द आइडियाज कि भाई हमें 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं मिनिमम, राइट? अगर आप नहीं कर सकते तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, बट यू वांट टू गिव फोकस 20 to 30 minutes, यू कैन डू एन HIIT वर्कआउट, यू कैन डू अ टबाटा वर्कआउट, बट ऑफ कोर्स डू इट अंडर इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज अगर आपने कभी भी नहीं किया, यू डोंट वांट टू कॉज योर सेल्फ इंजरी, सो यू नीड एन इंस्ट्रक्टर और अ गुड वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम यूट्यूब. यू कैन पिक दैट अप एंड फॉलो दैट एंड सी दैट यू आर एबल टू कोप. अदरवाइज योगा है, सूर्य नमस्कार है, देयर आर अदर थिंग्स, बट आई पर्सनली फील 10,000 स्टेप्स एक ऐसी चीज है, एक बार ये आदत लग जाए ना, you will never be able, like, you will not feel complete until you have done it for that day. So it's just a matter of developing a habit. And ज़्यादा मुश्किल नहीं है 10,000 steps करने के लिए ना, आपको सवा घंटा लगता है. ओके, अभी ऐसे सोचो तो करेक्ट सवा घंटा किसी के पास नहीं है, लेकिन हर घंटे उठ के अगर आप सिर्फ 1,000 स्टेप्स कर लो, 1,000 स्टेप्स विल टेक यू 7 minutes. अभी ऑफिस में हर कोई जाता है ना कॉफी पीने मशीन तक, कैंटीन जी वापस आता है ना, ऐसा थोड़ा चक्कर, कॉफी पी रहे, सिगरेट पी रहे, लोग पीते हैं, नॉट दैट आई एम एडवोकेटिंग स्मोकिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग पीपल डू दीस थिंग्स ऑलरेडी, राइट? सो जो चल उस समय जब आप निकले कॉफी पीने, तो उसी समय थोड़ा 5 मिनट स्ट्रोल कर लेंगे तो 1,000 स्टेप्स हो जाएंगे, एंड देन दैट वे 10 times we anyways take a break from the workstation every hour, so you can get your 10,000 steps in. It's not such a big deal. You can इट also हार्डली do, टेक्स 1.5 20 hours minutes या after each meal, right? So that is another way to incorporate it. You can do it while you're talking on the phone, even if you're in your office, you can go to the corridor while you're taking a phone call. And I mean, it depends on each situation how you can incorporate, but it is possible, that much I can tell you. Yeah, it happens. So I've also seen that even I go for a dog walk along with my dog. So that is Yeah, like half perfect. an hour twice. And then what I have done is कि ऑफिस में मैं जो है छोटे ग्लासेस रखता हूँ अपने पास ताकि जब भी मेरे को पानी पीना होता है तो आई गो टिल वाटर कूलर Very good एंड दैट idea. Oh, that's a brilliant suggestion, Vikas. That's amazing. एंड आई थिंक जो मेरे बॉस है ना वो आपके लगता है मेरे को लगता है आपके स्टूडेंट होंगे बिकॉज वो कॉल पे इतनी बातें करते हैं इतना वॉक करते हैं ना इट्स लाइक कि वो पूरी मैराथन कंप्लीट कर देते हैं एक दिन में कॉल्स पे ही तो जब आपने बोला ना कि कॉल करते करते आप वॉक कर लो आई थॉट कि शायद आप मेरे बॉस को जानते होगे 100%. How sweet, Vikas. That's very sweet. आई मैं उनको तो नहीं जानती, बट मैं बहुत सारे वीडियो जरूर बनाती हूँ जिसमें मैं यही चीज बोलती हूँ कि यार फोन पे बात करते करते, बिकॉज दिन में ना हम लोग सब कम से कम 1 घंटा फोन पे रहते ही हैं, और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते वॉक कर लो. लाइक राइट सो आपका मैंने कंटेंट भी देखा था दैट वाज वेरी गुड मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट पीपल कैन awesome. जस्ट गो एंड चेक योर कंटेंट इट वाज रियली गुड मैंने मतलब आई चेक योर कंटेंट एंड एवरीथिंग तो दैट वाज वेरी गुड. Awesome. Thank you. सो मैम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कनेक्शन बिटवीन स्लीप एंड वेट लॉस बहुत लोग होते हैं मतलब मेरे साथ तो ये बहुत होता है कि स्लीप का पैटर्न कभी फिक्स हो ही नहीं पाता है सो Right, right, right. नाउ आई कैन रिलेट कि जो मेरा वेट का साइकिल अप एंड डाउन चलता है तो मे बी वो वहाँ से लिंक्ड होगा सो Definitely.
how the I mean, what is the link between sleep and weight loss? ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि इमिजिएटली अगर आपकी रात को नींद पूरी नहीं हो रही है, स्ट्रेट अवे वेट आके सीधा स्टमक पे चलता है, यू नो। और किसी बॉडी पार्ट पे नहीं, सम पीपल आर थिन बट ऐसा पेट ऐसा निकला रहता है, सो We दैट call इज it ऑल beer लैक ऑफ belly. sleep. Yeah. So insufficient sleep will always lead to weight gain for two reasons. Number one, because you're likely to eat more the next day. Okay. And number two is that your body cannot handle the calories as effectively. सो एक तो हम खा ज़्यादा रहे और बॉडी बर्न भी नहीं कर रहा है, ये तो एक रीज़न हो गया। इसीलिए कहते हैं कि क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन इज़ अ की कंट्रीब्यूटर टू टाइप 2 डायबिटीज़ ऑल्सो। ओके। सेकेंड थिंग ये है कि जब आपके अंदर नींद की कमी हो, व्हेन यू लैकिंग स्लीप, यू ईट एक्सेसिवली। वाई? बिकॉज जो आपके हार्मोन्स होते हैं जो आपको सिग्नल करते हैं कि आपको भूख लगी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी में अगर रात को नींद बराबर ना हो। और वो कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हम वी गो फॉर रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड्स, इमीडिएट शुगर, लाइक बर्गर्स, फ्राइज, चिप्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड उसमें उसके साथ साथ वो जो केमिकल्स जो ये बताते हैं कि हम फुल हो गए, वो कम हो जाते हैं, राइट? सो यू आर कंटिन्यूसली feeling hungry and you're continuously craving quick energy foods, right, which are usually very high in calories. Also you feel lethargic, so आप अगले दिन वर्कआउट भी नहीं करोगे, चलोगे भी नहीं, बोलोगे छोड़ो यार, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है 10,000 स्टेप्स का, लेकिन मेरे लिए नहीं है, सो आई विल नॉट डू इट। एंड लास्ट इज ऑफकोर्स, अगर आप वेट कम कर भी लेते हैं, जो लोग की नींद बराबर नहीं होती उनकी बॉडी में से लीन बॉडी मास कम हो जाता है, लेकिन जिन लोगों की नींद बराबर होती है उनके बॉडी में से फैट कम होता है व्हेन यू आर लूजिंग वेट। सो अगेन फॉर फैट लॉस, sleeping at night 7 to 9 hours is very very essential. अगर आप वो नहीं भी कर सकते, let's say you have to work late hours, then I would say break your day into two parts. Take a good afternoon siesta for 1.5 hours and break your day into two parts. रात को get your 7 hours or 6 hours and then get your 1 hour in the afternoon. So that way also you can balance based on your schedule. ओके मैम, सो आई विल ट्राई दिस स्लीपिंग पैटर्न बिकॉज आई फील कि मेरा स्लीपिंग से ही सारा होता है। मेरे साथ क्या होता है कि मॉर्निंग में तो आई एम फुली चार्ज अप कि आज मैं डाइट करूंगा, स्टार्ट करूंगा। सुबह तो सब स्टार्ट होता है, सुबह अच्छा अच्छा खा के जाता हूँ, इवनिंग तक आते आते सब डाइट खत्म हो गई होती है मेरी। Wow. Amazing. I'm telling सो you, मैम, we are like brothers and sisters from different mothers. That's all I can say. सो आई विल आस्क यू कि आपका सॉल्यूशन निकल गया नहीं निकल गया उस चीज़ का, बिकॉज मैं तो लोगों को हमेशा Yeah. बहाना बोलता हूँ कि इट इज़ लाइक स्टॉक मार्केट की लाइफ में वेट अप जाएगा डाउन आएगा, ऐसे ही ओवरऑल जर्नी मेरी होगी, लेकिन अप डाउन तो चलता रहेगा। तो मैं तो हमेशा Right. ये बोलता हूँ। So I will say, Vikas, that before lockdown, I was 103 kgs. I'm ओह right वाओ! now 72, and it took me 14 months to get to 72, and I have been able to maintain it. And this is the longest I've been able to maintain this weight. I'm still not perfect. I'm still work in progress. I'll put it that way. But I can tell you, when I got married 22 years ago, I was this weight. So most people crave कि यार शादी के टाइम वाला वेट हो जाना चाहिए, तो वो तो हमने अचीव कर लिया है। अब उसके नीचे जाने की जर्नी अभी बाकी है, which I am still working towards. ठीक है, चलो देन आपने सॉल्यूशन ढूँढ लिया तो आई विल आस्क फॉर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन फॉर मी आफ्टर दिस सेशन। But definitely, I would love to help. सो मैम, आजकल जैसे देयर इज़ लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग जो होती है, तो व्हाट अबाउट हाँ दैट? जी। मतलब डज़ दैट हेल्प? सो इट डेफिनेटली हेल्प्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर करें, बिकॉज वो हर एक के लिए नहीं है। डिपेंड्स ऑन whether you're able to sustain that kind of long fasting hours or not, your work permits or not, because the idea is not to feel weak. Okay, but if you can do, it is very effective. बट 12 आवर्स की जो फास्टिंग पीरियड होती है ना, वो हर एक के लिए ज़रूरी है। और आयुर्वेदा ऑल्सो टॉक्स अबाउट इट। इनफैक्ट अगर आप इफ़ यू सी द जैन कल्चर, राइट, और द गुजराती कल्चर्स, दे डोंट ईट आफ्टर sundown, you know. So it is a करेक्ट। practice we've been following from ancient India, and latest research ये कहती है कि भाई जब हम खाना खाते हैं, it is as important as what we are eating, right? Because our body also has a circadian rhythm, it's like our digestive fires are strongest between 12 to 2 p.m. So if you have your main foods in your breakfast and lunch and your lighter dinner, it's better for your body. आप 12 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर करो एंड 12 घंटे बॉडी को रेस्ट दो। उससे क्या होता है कि आपको नींद भी अच्छी आती है। अगर जैसे कई लोग क्या होता है, खाना खाते ही सो जाते हैं, नाउ द बॉडी इज डाइजेस्टिंग एंड यू आर ट्राइंग टू स्लीप, वो ना थिंक अबाउट इट, अंदर मशीन चालू है एंड यू आर ट्राइंग टू स्लीप, यू कैन नेवर गेट डीप स्लीप। But if you have your dinner 3 to 4 hours before bedtime and you have your breakfast within 1 hour of waking up, you've given your body enough time to digest the food, and therefore you can get deep sleep, sound sleep.
right? So that way it helps in maintaining a healthy weight. So 12 hours eating window, 12 hours fasting window, ये हर कोई कर सकता है. It is there in our Ayurveda. It is considered a very good way of eating, which is popularly known as time restricted eating. लेकिन intermittent fasting, which is 14 hours fasting or 10 hours eating window or 16 hours fasting, 8 hours eating window, is individual cases. I cannot recommend it blindly to everyone, but 12 hours हर कोई कर सकता है. ओके एंड मैम व्हाट अबाउट आई एम श्योर दैट आपने इतनी वेट की जर्नी देखी है तो यू मस्ट हैव ट्राइड वाटर फास्टिंग आल्सो बिकॉज आई हैव ट्राइड इट मेनी टाइम्स सो इज इट सेफ बिकॉज मैं तो ट्राई करता हूँ मतलब मैं आपको अपना केस बता देता हूँ कि आई हैव ट्राइड फॉर 72 आवर्स ऑल्सो पोज दैट समबडी टोल्ड मी कि एटलीस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर लो तो उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग के वन डे आई डू फील थोड़ा सा वीकनेस उसके Hungry. बाद मेरी एनर्जी बढ़ने लग जाती है ऑल्दो आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग ओनली वाटर बट मेरी एनर्जी Correct. लेवल्स दे स्टार्ट गोइंग अप. Keep on increasing. Yes. हाँ So that is the beauty about any fast. If you actually prolong the fast, your energy levels do go up. So even a lot of people do 18 hours of fasting every day or 20 hours of fasting is because your body over a period of time, the hormones which are signaling hunger will actually go down. In fact, research ये कहती है कि instead of restricting your calories, fasting is a better way, scientifically proven to be a better way to lose weight and keep that weight off. A lot of times when people go for calorie restricted diets, उनका weight loss तो हो जाता है लेकिन they are not able to sustain it. But weight loss because of fasting is good. Again, water fasting, I don't know, again, it's not for everybody because it takes a lot of mental toughness to be able to do it. And a lot of people may not be able to follow. So we don't blindly advocate. Again, depends on how you do it, how you incorporate the foods back to be able to get sustained result. A lot of times people who, let's say हम लोग religiously भी बहुत लोग फास्ट करते हैं ना, जैसे नवरात्रों में लोग करते हैं जी 9 दिन का फास्ट, पर वो लोग जो वेट लूज करते हैं वो 1 महीने में वापस भी आ जाता है. वैसा फास्ट करना है तो उसके अच्छा फास्ट मत करो. It is करेक्ट. better to create a lifestyle change. But if you can once a month take on a 2-day fast, water fast, and you want to just allow your body to detox and cleanse, why not? You can do it if you're able to sustain it. But again, as I said, I cannot blindly recommend it for everyone because we need to some case to case basis, and some medical cases में we cannot allow that, right? But 12 hours हर कोई कर सकता है. ठीक है मैम. मैम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड स्किन केयर बी पार्ट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल. Very good question, Vikas. Very good. So again, I think जहाँ पे हम स्किन की बात करते हैं, बहुत से लोग ये realize नहीं करते that skin is the largest organ in our body. And it is one करेक्ट. organ which is interacting with the outside environment. It is exposed to the pollution, the chemical exposure, as well as the internal organs. अगर आप आज देखोगे कि जो food intolerances हैं या food sensitivities हैं या बहुत सारे hypothyroidism के cases आ रहे हैं, they are all attributed to टॉक्सिन एक्सपोजर फ्रॉम द इन्वायरमेंट. सो हमारी स्किन की जब बात आती है, बहुत से लोग आदमी लोग स्विच ऑफ हो जाते हैं, सोचे तो ब्यूटी क्वेश्चन है, ये तो औरतों के लिए. नहीं भाई, स्किन सबको होती है, आदमियों को भी होती है. यू ऑल्सो हैव टू टेक केयर. तो सबसे पहली बात ये है कि हमें अपनी एयर को क्लीन करना है. अब वो हम कैसे करेंगे? हम अपने सिटी का पोल्यूशन तो कम नहीं कर सकते, लेकिन इन टुडेज डे एंड एज इफ यू आर सिटी, यू नीड टू हैव अ गुड हेपा फिल्टर एयर प्यूरिफायर इन योर हाउस, इन योर कार एंड इन योर ऑफिस. दिस इज अ गिवन. अगर आपके पास एसी है तो आप एयर फिल्टर, एयर प्यूरिफायर भी अफोर्ड कर सकते हो. यू मस्ट हैव इट टू क्लीन द एयर दैट यू आर ब्रीदिंग. दैट्स नंबर वन. सिंपल सी बात है, बी द फिल्टर और बाय द फिल्टर. यू नो या तो आपका वेरी गुड फिल्टर वो वन. काम करेगा या आपके लंग्स वो ही काम करने वाले हैं. तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन बाय द फिल्टर, राइट? Because lung replace तो होएगा नहीं. It will become a big करेक्ट. cost. Easy to buy a filter. Second is have a good water purifier, and plumbed line जो water purifiers होते हैं, those are good. Or you can have mineral water if you prefer that. अगर आप नहीं लगा सकते water purifier, कई लोगों के पास arrangement नहीं रहता है. यूज़ ऑर्गेनिक क्लीनर्स फॉर योर होम क्लीनिंग. सो जैसे आपके बर्तन हो गए, धोने का साबुन, कपड़ों का साबुन, फ्लोर क्लीनर्स शुड बी कोकोनट एंड एलोवेरा derivative based. Don't go for वो अच्छी खुशबू वाले, because अच्छी खुशबू is coming from the chemical. Okay, don't go for those करेक्ट. products. Use organic products when it comes to your skin care. जैसे आपने shampoos, conditioners, um, सल्फेट फ्री यूज़ करिए, पैराबेन फ्री सोप्स यूज़ करिए. यूज़ products which are more natural. And when it comes to your facial skin, you have to take good care of it, because
सी लॉट ऑफ टाइम्स नो वी इन्वेस्ट, हम लोग 50,000 की साड़ी खरीदते हैं या 20,000 का ड्रेस खरीदते हैं, लेकिन आवर फेस लुक्स लाइक 10 रुपीज का हम लोग क्रीम लगाते हैं फेस पे. इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, यू नो. योर स्किन इज गोइंग टू गो डाउन विद यू टिल यू डाई. It's your asset. You have to make it look pretty, and pretty, you don't need filters. There's no makeup. I don't have any makeup on my face right now. Okay, I don't need a filter right now. All I'm saying is a good skin, a well maintained skin always looks nice. ना आपको selfie लेते Correct. वक्त filter लगाने की जरूरत पड़ती है, ना आपको वीडियो बनाते वक्त जरूरत पड़ती है. You can look great. So उसके लिए क्या करना है? Cleanse करना है, tone करना है, exfoliate करना है और hydrate करना है. So when it comes to cleansing, use a good quality cleanser which is cleaning the uh, you know the surface layer, removing even PM 2.5 particles. Not a face wash, not a soap. It's not going to do justice for your skin. Okay. Second would be use a good quality toner, which is removing the dirt from the second layer of the skin. Again, अगर आप बॉम्बे में ना एक चक्कर भी बाहर काट के आते हैं और अपना मुंह पोंछते हैं ना, तो पूरा काला हो जाता है कॉटन. Right? So it's all going into your skin. So you have to remove it. So when you wipe, it becomes black, right? So you need a good toner, and you need exfoliation, because if you don't remove dead skin from the face, it's not going to look glossy and shiny. कई लोगों का skin ऐसा चमकता है ना, वैसा नहीं आएगा. And you need good moisturization की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है. एवरीबडी बेसिकली वाटर, एडिंग वाटर योर स्किन. ऑफ कोर्स आप अच्छा सैलेड खाइए, पानी पीजिए, वो जरूरी है, लेकिन बाहर से भी आपको नरिश करना है अपनी स्किन को. सो यू नीड अ गुड क्लेंसर, अ गुड टोनर, a good exfoliator like a polishing scrub, and anti-aging moisturizer for people who are above 24, and a regular moisturizer for hydrating the skin for people who are below 24. Now again, a lot of people have this question, what is the right age for anti-aging? So as I said, 24 and plus, because the damage you see in your skin in your 40s in terms of fine lines and wrinkles actually starts under the skin in your early 20s. So you should start using a good anti-aging serum, moisturizer, etc. in your early 20s. And if you ask me what product to use, I personally have been, so I'm 45, and most people when they look at me don't guess my age, and I think it's all thanks to Yeah. a brand called Artistry. I've been using their skincare range since November of 2010. They have really kept my skin flawless and looking beautiful and looking younger for all these years. And recently, they also launched a beautiful skin nutrition range with firming solutions and anti-aging solutions, and talking about 600% reversal of fine lines. They have a repair complex, and they with visible results in just 2 weeks. And I know that Artistry is a brand. Whenever they make a claim, they actually deliver on that. So I would recommend definitely check out that range if skincare is a concern for you. But overall, it's the air purifier, the water purifier, organic cleaners, organic products, and skincare, which is the facial part of your skin, which and men can also use those products. Okay, ma'am. Yeah, I hope that answers your question, Vikas. Yes, yes. So, ma'am, coming to my last question, that Yes. why should people come to health coach? जैसे इतनी इन्फॉर्मेशन वैसे नेट पे अवेलेबल होती है, बट स्टिल आई फील कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस इज नेसेसरी वेन एवर यू आर टेकिंग दिस डिसीजन. बट एक बारी Right. इफ यू कैन जस्ट टेल अस कि व्हाई पीपल शुड कम फॉर हेल्थ कोच. डेफिनेटली. आई थिंक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा किसी का. यू नो, like we are करेक्ट. reading, we are saying wow, we are sharing also with our friends and showing how much of a health freak I am, but body में कोई चेंज नहीं आ रहा है, because you need somebody to guide you. It's as simple as that. अगर आज आप जिम जाके वेट्स उठाने शुरू कर दो, तो आप you will cause yourself injury, more harm than good, which is why you need a trainer to tell you कि भाई ऐसे उठाना है. हो सकता है कि initially for 3 months you will work with a trainer and then say now I've understood, now I'll take care. So you need to go to a health coach at least for 3 months, so you can become your own health coach after that. You will understand what your body needs, how it works, what kind of foods work for you, what kind of foods don't work for you, what should you eat when you're going out for a party, what should you eat on a daily basis. All those questions will get answered in a good 12-week period. So a health coach is going to guide you. They are also going to act as your accountability partner on a day-to-day basis to ensure you're able to walk that path. Because all of us start with New Year's resolutions of good weight loss and healthy weight. लेकिन February तक आते आते तक सब भूल जाते. भूल सोचते जाते हैं. अगले साल करेंगे, ये साल तो हो गया अभी. So we don't want to go down that path. They can also suggest you some
fitness challenges. They can put you on walking challenges. They can give you some basic things, activities to do. Of course, they will put you in a community of like-minded people, as I said in the very beginning, because a health lot of clients. So you may not know people who are on the health journey, but Correct. and they can put you in a community and do regular webinars and educate you guys, share course material, share the advanced researches that are coming up, and keep you updated through videos, through audio materials, and help you in your journey of achieving great health. Yeah. सो राइट, थैंक यू सो मच। आई मीन आपकी जैसे आपने जो बताया हेल्थ कोच के बारे में, आई फील दैट हमारी जर्नी कुछ सेम ही रहेगी हमारे चैनल की आपके साथ, तो इट वुड बी ए लॉन्ग जर्नी टुगेदर, आई एम श्योर। Wonderful. एंड टुडे आई हैव लर्नड अ लॉट, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ लर्न किया होगा। एंड डू लाइक आवर कंटेंट, एंड अगर इफ यू लाइक टू गेट इन टच विद डॉक्टर निधिका, आप मैं डायरेक्ट लिंक भी शेयर कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। अलॉन्ग विद दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल कनेक्ट यू विद डॉक्टर निधिका। And thank you so much, Dr. Nidhika. It was a great session, and thank you for taking out time. Thank you so much, Vikas. I think you're the most wonderful host I have ever been interviewed by. I love your energy and your Thank you enthusiasm so and much. the joy and the heart with which you speak about the subject. So, kudos to you and more power to you. Keep doing the good work. And thank you so much for Thank you having so me. much. Gratitude. Thank you so much. Namaste, ma'am.